Assalamu alaikum, I am Warda Khalid and today we are going to study rotavirus. Rotavirus was first discovered in Australia in 1973. It gets its name from the shape of the virus. Rota means wheel in the Latin language. It is the primary disease of low socio-economic countries. It causes the death of about 440,000 children worldwide annually. It is the most common cause of diarrhea in the children less than 5 years of age. Coming towards its structure, the rotavirus belongs to family Reoviridae. It has icosahedral structure. Rotavirus genome consists of 11 segments of double-stranded DNA that are enclosed in a triple-layered capsid. It acquires an envelope during replication and then loses as it matures. यानी कि जो मेच्योर वायरल पार्टिकल होता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती. Prominent glycoprotein spikes that play a key role in cell penetration and virulence. Coming towards its classification, there are 7 different groups A to G based on its antigenicity. The group A is most common cause of GI in children less than 2 years of age and milder diarrhea in older children and adults. Group B has been found to cause human disease in China with outbreaks of severe diarrhea in adults and infants. Group C is responsible for sporadic case of diarrhea in infants around the world. Group D, E, F have not been found in humans. Coming towards its pathogenesis, the particles are carried to the small intestine where replication occurs in the epithelium of intestine. Within 24 hours of infection, the shape of villus epithelium changes from columnar to cuboidal and the villi become shortened. This results in decreased intestinal absorption and may lead to isotonic diarrhea. Recovery from the first rotavirus infection does not lead to permanent immunity, but repeat infections are typically less severe. ये डायग्राम में दिखाया गया हुआ है. ए डायग्राम में जो है वो नॉर्मल विलाई का स्ट्रक्चर दिखाया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बी के अंदर जो है वो रोटावायरस इन्फेक्टेड विलाई का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. कैसे वो कॉल्यूमिनेट से क्यूबिलाइड हो गया है, इस तरह उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, वाटर कम रिड्यूस होता है, और जो कि आइसोटोनिक डायरिया को वजह बनती है. अब हम इसकी ट्रांसमिशन स्टडी करेंगे. रोटावायरस जो है ना वो हाईली कंटेजियस होते हैं. इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन फिको-ओरल रूट है एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड surfaces and toys. Can live for hours on hand and get spread from one person to another. Children can spread rotavirus both before and after they become sick with the diarrhea. Symptoms appear होने से पहले से लेके बाद तक बच्चे जो हैं वो cause of infection बन सकते हैं. Coming towards its clinical manifestations, it causes fever, abdominal pain and vomiting, watery diarrhea lasting 3 to 8 days, mild to severe dehydration if untreated can result in death also. Adults and other children can also become infected and show mild symptoms, sometimes even asymptomatic. Rotavirus infection also occur. Coming towards its diagnosis is often based on symptoms and a physical examination. It's confirmed by identifying the virus in patient's stool using ELISA technology. These detect only group A rotavirus. सिर्फ ग्रुप A रोटावायरस को जो है वो ELISA के ज़रिए डिटेक्ट किया जा सकता है. इसकी प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा स्टडी कर लें. वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है वो अवेलेबल है. चिल्ड्रंस फ्रिक्वेंटली वॉश हैंड्स पार्टिकुलरली बिफोर ईटिंग. खाने से पहले बच्चों के हाथ धुलवाए जाएँ तो वायरस को रिमूव किया जा सकता है. इन हॉस्पिटल्स रोटावायरस आउटब्रेक्स आर कंट्रोल्ड बाय आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड पेशेंट्स. क्योंकि ये हाईली कंटेजियस है तो फिर आइसोलेट करना पड़ता है, और आइसोलेट करने से रोटावायरस आउटब्रेक्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है और किया जाता रहा है. Coming towards its vaccines, there are 2 vaccines are available, Rotatec and Rotarix.
Both are live attenuated oral vaccines given orally at the age of 2 months, 4 months and 6 months, only to be given to infant, not for older children nor adults. These vaccines prevent 74% to 87% of the all rotavirus illness episodes. Thanks.